Now, children, today let's start with chapter number 4, that is major domains of the earth. So, in this chapter, let's study about the major domains. So, our earth is the unique. Our earth is unique because it is the only planet which support life. There are three elements, that is land, water, and air. So, we call it lithosphere, hydrosphere and atmosphere. जहाँ पे तीनों आके मिलते हैं, ठीक है, जैसे आपका ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये हाइड्रोस्फेयर हो गया, ये लिथोस्फेयर हो गया, राइट? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere. Where they all three meets here. What it is? It is biosphere. Now what is lithosphere? It is the uppermost solid layer. ये क्या है? ये uppermost solid layer Earth की. It is formed of rocks and soil. Right? The top layer is called crust. Crust कहते हैं उसे. Now the top layer is called crust and one of the total area of lithosphere जो है तो 71% water से cover है और 29% of the surface of the water is in the form of land. So this level of water is called sea level. जो height of the depth of any point of lithosphere वो किससे measured होती है? Reference of the level से. So what are continent? The large continuous masses of land above sea level is called continent. We have 7 continent. Asia जो आपका larger part of land mass है वो आपको कहाँ मिलता है? Northern hemisphere में. तो उसको हम land hemisphere कहते हैं और ocean वाले को water hemisphere कहते हैं. तो ocean and continent. Asia क्या है? Largest continent which makes up nearly 1/3 of the earth land mass. 48 countries है इसमें. It lies in the eastern hemisphere, Tropic of Cancer, and it is separate from Europe by Ural Mountains on the west. ठीक है, इसको हम एक साथ क्या बोलते हैं? That is Eurasia. So if we talk about Africa, it is the second largest continent of the world. Equator passes through the middle of this continent. Large part of it lies to the north of equator. Both the Tropic of Cancer and Capricorn, they passes through Africa. ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर जो नाइल है वो यहाँ से फ्लो करती है और जो हॉट डेजर्ट है दैट इज थार डेजर्ट वो भी यहीं लाई करता है. नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ये आपका नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. इट इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट इज साउथ अमेरिका, वेस्टर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है. ट्राइंगुलर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू इट. अटलांटिक ओशन इसके ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में, सदर्न ओशन साउथ में, कैरेबियन सी क्या है नॉर्थ में. सो ये होम है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजोन. इंडीज माउंटेन रेंज रन्स करती है यहाँ से. देन वी हैव एंटार्क्टिक विच इज द आइस कॉन्टिनेंट. इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है बिकॉज इट इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. Right, Europe, 6th largest continent है, bounded by water bodies. Right, its nearness to Asia, Africa and America. Australia, it is the smallest continent. The Iceland continent, it is covered by water throughout the. It is surrounded by Indian Ocean west में, Southern Ocean और फिर आपका Pacific Ocean east में. और आपके अराफुरा सी कहाँ है इसके north. Now we have hydrosphere. So Earth is often refers to as blue planet because 70% of its surface is covered with water. 29% लैंड से कवर्ड है. यहाँ पे आपके जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर लाइक ओशन, सीज, रिवर, लेक्स ऑल आर इंक्लूडेड. 97% of the water is found on the ocean, which is unfit for human use. Right? 2% remaining water is locked in ice caps. Only 1% is available. Ocean, seas, lake, rivers, ice sheet, underground water or water vapor. They are in the atmosphere, and all of this water, that is 97% is in ocean. Remaining 3% fresh water है and there are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. So Pacific largest और deepest है. 1/3 of the total surface जो है वो आपका अर्थ है. सबसे deepest points यहाँ पे lie करते हैं, that is Mariana Trench. If we talk about Atlantic Ocean, second largest ocean है but it is about half the size of Pacific. S shape का है. ठीक है. Then we have Indian Ocean. It is the only ocean which is named after our country India और जिसकी shape है वो almost triangular. If we talk about Arctic Ocean, it is the second smallest ocean. It is connected with Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water. ये North Pole और कहाँ तक extend करता है up to Arctic Circle. Antarctic and Southern Ocean, it is extended to 3 oceans: Indian, Atlantic, Pacific. Right? Next atmosphere, it is the envelope of gases surrounding the Earth. It's called atmosphere. The layer of air exert thousands of kilometers above the Earth. ये 97% of the air है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है. कॉम्पोजिशन की बात करें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% दैट इज अर्थ. नाइट्रोजन इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज यूज फॉर ब्रीथिंग. और कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं. नाउ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर.
We have troposphere, stratosphere, ionosphere, and thermosphere. So if we talk about uses of atmosphere, it protects life on the earth by absorbing ultraviolet solar radiation. ये सरफेस को वार्म करता है, टेम्परेचर को एक्सट्रीम डे और नाइट में रिड्यूस करता है. वाटर वेपर जो है वो एसेंशियल रेन और स्नो के लिए. डस्ट पार्टिकल जो है वो किस फॉर्म में होते हैं, कोर के. नाइट्रोजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्ट. If we talk about biosphere, means bio means life. It is the part of earth where life exists. In this zone, land, air and water, they are in close contact, and what they make the life possible. Right? It is occupied by microscopic virus of large animals, which is called as animal kingdom. इसको हम क्या कहते हैं, animal kingdom. And plant kingdom, plant and animal depend on each other और जिनका coexistence होता है plant और animals का, इसको हम क्या कहते हैं, ecosystem. The biosphere is made up of distinct area with a particular climate, soil and living communities of plants and animals. Now, man and environment. Our environment includes all living things in water or air. Different components of our environment are interrelated and interdependent. कोई भी change नहीं होता है. इससे क्या होता है? आपका the water of the hydrosphere evaporates with atmosphere but comes back as rain. जो interdependence होती है of the regimes of the earth is important fact of that. If the environment distribute too much, the entire life cycle है वो क्या होती है आपकी सेक्टिक हो. Their greed and lack of concern towards the earth resulting in the pollution of India. So several activities like soil, water, they are becoming polluted. And if we wish to maintain the balance, we use more resources wisely, and we must try to check the pollution of the land. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.